This is me cooking Indian food for Loch Ness Monster. What is Loch Ness Monster and why I'm cooking Indian food for it? Well, this video answers these questions. Oh, shit. Can you see that? See how low those planes are flying? Loch Ness Monster or Nessie is one of the very popular mythical characters like Bigfoot or Himalayan Yeti, Kraken, and dragons. With an average of 13 sightings every year, it is the most photographed monster. Due to its long neck, small head, and turtle like body, people believe that it resembles the long extinct plesiosaur. It is believed that a small population of plesiosaur has somehow survived the dinosaur extinction event and have been living and breeding since then. The earliest account of Loch Ness Monster comes from Adonan's work called Life of Saint Columba. He writes that once a follower of Saint Columba was attacked by a beast while swimming across River Ness. When the beast approached him, Saint Columba made a sign of cross and asked the beast to go away. The monster stopped and fled away, leaving the follower. The modern interest in Loch Ness Monster started on 22nd July 1933. When George Spicer and his wife saw a creature crossing the road in front of their car. The news of this event spread like a wildfire and caused a rush of people to search for the monster. Then came the first ever photograph and perhaps the most popular one, called Surgeon's Photograph. It was published by Daily Mail on 21st April 1934 and was clicked by Robert Kenneth Wilson, a London-based gynecologist. For next 60 years, this picture was considered as a proof for existence of Loch Ness Monster until it turned out to be a hoax. In 1999, a book was published called Nessie, The Surgeon's Photograph Exposed. The book claimed that after the 1933 incident of Nessie sightings, British newspaper Daily Mail hired a South African filmmaker and hunter called Marmaduke Wetherill. Within some days of searching, Wetherill found the footprints and sent those to London's Natural History Museum. Museum inspected those and concluded that these are of a hippopotamus. Basically, Wetherill used an ashtray that looked like the foot of an hippopotamus to fool the world. This cheap trick was ridiculed by Daily Mail as they were the one who hired Wetherill. Wetherill couldn't digest this slur and decided to take a revenge. He co-conspired with his son-in-law Chris Sperling, who was a sculpture specialist. He sculpted a figure out of wood that looked like Nessie and fixed it over a toy submarine to make it float. Once the sculpture was ready, Ian Wetherill, the son of Marmaduke Wetherill, took some pictures of it and gave it to a guy named Maurice Chambers. Maurice Chambers then gave it to Surgeon, that is Mr. Wilson, who enjoyed practical jokes. Mr. Wilson then sold the pictures to the Daily Mail as part of the prank. Chris Sperling confessed all this on his deathbed in December 1994. There have been many scientific expeditions and studies since 1933, like Operation Deep Scan, where 24 boats equipped with sonar were deployed across the width of the lake in 1987. They did scan something longer than a fish at one location, but couldn't explain what it is. Another big study was the DNA survey of Loch Ness in 2018 by Professor Neil Gamel of the University of Otago. His study found no evidence of any reptile DNA sequence from the several samples of lake water he took. It's 2021 now, and I think I should take the responsibility on myself to solve this mystery, once and for all. My hypothesis is that nobody has ever offered tasty Indian food to Nessie. I'm going to present some popular Indian snacks and will hope that Nessie will come out of deep and dark Loch Ness to share my dinner.
Because I stay at the west coast of Scotland, I had to change 3 trains to reach Inverness. First stop was Glasgow. Glasgow has 2 major railway stations, Glasgow Central and Glasgow Queen Street. My first train took me to Glasgow Central Station, from where I walked to Queen Street. It was nice to see life slowly coming back to some sort of normal after 5 months of lockdown. I knew that I will have a lot of free time during this trip, so I set a goal to finish an audiobook. Wait till end of the episode to see if I succeeded. The train from Edinburgh Haymarket to the Inverness was the longest, but didn't feel that way because of the stunning views on the track. So finally, I'm in Inverness. The train got delayed by like half an hour or something. So, but the place where I have to camp is it's around 30 kilometers from here, and I can only get there by bus. And next bus is after 3 hours. So I have like 3 hours to spend. So maybe I'll spend like half an hour, 1 hour looking at the city, and then I'll go in a restaurant and eat because I'm really hungry. I haven't eaten anything since morning, so that's what I'm going to do. Ah, but it's a really lovely place. काफी सुंदर जगह है. I was planning to eat something local, but then I read this. This restaurant claimed that they are the longest established Indian restaurant in the Scottish Highlands. So I had to taste their food, right? Their menu was like most of the British Indian restaurant, and out of habit, I was trying to find something unique and found one called Chicken Silsila. I ordered that with Peshawari naan, mango lassi, and a papad, also called papadom, along with some chutney and pickle. The food was good and I recommend this restaurant. I was meant to pass at least 2 hours at the restaurant, but because I was starving, I finished my food in like 20 minutes and then I had to wait at the bus stop. Not fun. My initial plan was to camp in Wild, but I knew that I will reach the foyers by 6 pm and I will not have enough daylight left to find a good spot to camp. So I decided to pitch my tent at a campsite at foyers. A campsite basically gives you a spot to pitch your tent or park your caravan and have toilets and refreshment facilities. The Loch Ness Shores Camping and Caravanning Club is definitely an A1 facility, but twice as expensive as other campsites if you are not a member. So please consider that if you decide to camp here or park your caravan.
Google weather is showing like snow at 4 a.m. or 5 a.m. tomorrow morning. Let's keep the fingers crossed that it doesn't happen and the weather is good tomorrow. Otherwise, how will I feed Nessie monster Indian food? For now, I have to feed me. This looks quite comfy. I think that's my best investment. So very, it's like I'm on a very comfortable bed. 7-8 बार फूक मारने से भर गया. I've been traveling like since 7 a.m. Also, I didn't sleep well last night. So I'll take like 1 hour break. I'll rest for 1 hour. Then we'll see around at night in the woods and near Loch Ness. We'll go for a walk and make some friends. पता नहीं क्यों अभी फैज़ की एक गज़ल याद आ रही है. फैज़ बेचारे थोड़े बदनाम रहे हैं रिसेंट समय में. हम देखेंगे उनकी लिखी हुई जो नगमा है, कविता है, वो थोड़ी बदनाम रही है, लेकिन बहुत कमाल के लेखक. गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. बेवकूफ. We have come to an end. There is no more path from here. There's just one big rock here. I can't go ahead of it, so I think better get back to my tent instead of me finding a way in the dark, which is not right. So yeah, let's head back. We'll come tomorrow morning with fresh motivation and fresh energy. Ha! कल ढूंढ के निकालेंगे. Morning. कल मैं ठीक से सो नहीं पाया था निकलने से पहले, क्योंकि काफ़ी मेरे को एन मौके पे मैंने पैकिंग की थी. रात के 1 बज गए थे और सुबह मुझे जल्दी निकलना था ट्रेन पकड़ने के लिए. तो मैं कल से बस 5 घंटे ही सो पाया था. एंड इफ़ आई डोंट टेक लाइक 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप आई डोंट फंक्शन वेल. मुझे बहुत ज़रूरी है 8 घंटे की. तो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था आज, नींद आ गई, झपकियाँ आती रही, बीच बीच में आँखें खुल रही थी. थोड़ी सांस लेने के लिए मैंने अपने स्लीपिंग बैग में थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी. तो वो जो जगह थी उससे से ठंड आ रही थी बहुत ज़्यादा. तो मैं उसको बार बार ढक ले रहा था. तो थोड़ा सा इतना सा खोल के सोता था. लेकिन रात के समय टेम्परेचर कुछ 0 डिग्री के आसपास था, तो नाक एकदम जम जाती थी. तो फिर उसको ढक लेता था. फिर ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सांस लेने के लिए जगह बनानी जरूरी है. फिर खोल लेता था, फिर 2 घंटे नींद आई, फिर आँख खुल गई, फिर ढक लेता था. तो ऐसे मेरी बीच बीच में आँख खुलती रही. लेकिन ओवरऑल आई रेस्टेड वेल, आई स्लेप्ट वेल, क्योंकि 10 बजे से सुबह
6:30-7 बजे तक मैं सोता रहा, तो अच्छी बात है ये। अभी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, सूरज भी निकल आया है। वेदर प्रेडिक्शन मैंने देखी तो दोपहर के 3 बजे तक बादल हैं, पर शायद बारिश ना हो, होपफुली। और पास में यहाँ पे एक विज़िटर सेंटर भी है। विज़िटर सेंटर से वो 8 बजे खुलेगा सुबह के, तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद वहाँ पे, और वहाँ पे पैम्पलेट लेंगे। पैम्पलेट में लिखा होगा कि आसपास के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, और उन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो भी होंगे उन्हें देख के आएंगे। थोड़ा वॉक होगा दिन में। ऊपर से जिसके लिए मेनली हम आए हैं, यानी नेसी मॉन्स्टर के लिए कुक करने के लिए, वो भी किया जाएगा। तो अब बस मैं अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा हूँ, फ़ोन की, कैमरा की, और बस थोड़ी देर में सब कुछ पैक करके निकलेंगे और मिलते हैं फिर लॉक नेस के किनारे। तो दोस्तों आग तो लग गई है अब। All I have to do is just maintain this. So I'll keep the big logs now, and I think within next 10 or 15 minutes it'll be ready to cook. Maintaining a fire is like always harder than it looks. But yeah, at least we got a good flame now. That's alright. Just stay away from the fire. Everything else. Very excited. तो देखें क्या है आज नेसी की दावत के लिए। सबसे पहले one of the basic thing that every Indian likes, loves, maybe not love but like definitely, जब भूख लगी पार्ले जी। एक पार्ले जी मेरा, एक नेसी मॉन्स्टर का, एक मेरा, एक नेसी मॉन्स्टर का। ये 2 बिस्किट मैं नेसी मॉन्स्टर के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। क्या पता पार्ले जी पसंद आए। They have one more very popular Indian snack, आलू भुजिया हल्दीराम की। I know पैकेट में नहीं है। When you camp you have to take everything like by weight. तो छोटी सी डिब्बी में थोड़ी सी आलू भुजिया लाया हूँ। आहा, ओह, ओए, हो सकता है नेसी मॉन्स्टर जो है is not like cheap for Parle Ji. He needs some special cookies or biscuits, whatever. America हो या UK, depending upon what. पिस्ता बिस्किट्स, एक पिस्ता बिस्किट लाया हूँ मैं। एक सिर्फ, तो इसको भाई भाई को आधा आधा बांट के खाना पड़ेगा। तो आधा विशाल का, आधा मॉन्स्टर का। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? Ooh, that's a special one. Ratnagiri mango. It's mango season in India. Just started.
and luckily I could get Alfonso coming directly from Maharashtra. It's said to be king of mangoes. और हिंदुस्तानियों को आम से कितना प्यार है ये सभी जानते हैं. आहा, Ratnagiri mango in Scotland. Oh, look at the color, man. Now you know why these mangoes are so famous. This oranges, yellow. आहा, क्या बात है, क्या बात है. Oh. पूरे हाथ सन गए हैं, लेकिन आम खाना ही इस तरह से चाहिए. एक्सोटिक इंपोर्टेड फ्रूट ऑफर हो रहा है. अब तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा. एक आम मेरा, एक आम नेसी का. We've seen Nessie monster, but we don't know if there's a lady Nessie monster, if there's a couple out there. So I have a very strong feeling that Nessie is a bachelor. And what's the most popular bachelor food in India? You guessed it. You guessed it. Maggie, Maggie, Maggie. Maggie, Maggie, Maggie. 210 ml. 210 ml. Oh, we have ample water. Don't worry. विशाल के अनुमान से 210 ml. ये 100, ये 200 ml हो गया. I'm not going to break it in 4 parts. सीधा. Hey there. Sorry? Have you seen her today? Nessie. Well, that's what I'm doing. I'm cooking Indian food for it, so it'll come. I'm baiting him with Indian food. You found out she likes Indian. Yeah. So that's the idea. Let's see. Our father was he fished this a lot, and he was convinced. Uncle Kenny saw Nessie. And your cousin saw her. There's been a few sightings this year. All right. A lot. Well, I have my camera rolling. I think there's a prize, right? Some money if someone can give like right footage of it. You So, could be here for a while. yeah. Well, it's better than scratching lotto. मैगी मैगी मैगी. एक तो ये साले मैगी वाले इतना झूठा दावा करते हैं 2 मिनट वाला. झूठे साले. 2 मिनट में कभी मैगी नहीं बनी आज से. मैगी मसाला. ये तो बहुत ही गर्म हो गया. बहुत ही गर्मी है. हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए. Cool. I like my Maggie little soupy. थोड़ी सी सूपी सूपी सी मैगी मेरे को पसंद है. Don't like very dry. नेसी को मैगी देना तो भूल ही गया. 1 चम्मच बची है बस. तो नेसी देव जी को कुछ नया बड़ा भोग लगाने से पहले लेट्स हैव सम स्लाइट स्नैक. किसको बचपन में मैंगो बाइट पसंद नहीं थी? एवरीवन लव्स इट, राइट? सो गुड.
मैंगो बाइट्स, ये टॉफ़ी। ओके, सो एक मैंगो बाइट मेरी। चॉकलेट आ गया हाथ में, और एक नेसी की, और मेरे पास 3 हैं, तो यानी 2 मेरी। Do I look stupid doing all this? Of course I do, man. What am I doing here? Oh boy, why am I doing this? So, I'll be cooking this side. पीछे से अगर मॉन्स्टर आया तो मुझको बता देना। हवा भी नहीं लगेगी, हवा पीछे से करके ले जाएगा। अब है ब्रह्मास्त्र की बारी। If it doesn't come with this, then nothing can bring it. The only Indian food that no one hates. It's really hard to find anyone who hate this one. Matar paneer. Oh shit! Can you see that? See how low those planes are flying. दो तीन चम्मच तेल। अगर ये मेरा गिरा ना पैन, सब खराब हो जाएगा। Then I already prepared some spice mix before leaving home. There's bay leaves, cinnamon stick, and 3 cardamom. इसके बाद हम इसमें डालेंगे garlic, some more garlic and onion. Because the onion pieces are so big, I think it should be called Matar Paneer Do Pyaza, because Do Pyaza recipe has like really big onions. And we have to blend this, but because I don't have the blender, so I'll just use these big chunks in the Matar Paneer. So it's like a slight modification to your regular Matar Paneer. I think it's ready to put some tomatoes. It burns my heart that I'm using a stainless steel fork for a Teflon pan. But as I said, when you're camping, you have to improvise. So I can't be too picky. Okay, अब इसमें थोड़े से मटर डाल देते हैं। अब जब तक ये पक रहा है, I'm going to use some cashews and spice mix. ये मसाले मैं पहले से घर से प्रिपेयर करके लाया हूँ। इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, नमक, हल्दी, ये सब है। तो ये गए मसाले। नाउ वी हैव टू कुक द स्पाइसेस। क्या महक आ रही है भाई साहब, दूर दूर तक महक रही होगी अभी वादी, इसकी वजह से, इन मसालों की वजह से। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी राह आओ मेरे सिवा। इसको हम बस 2 या 3 मिनट ही चलाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पानी डाल देंगे इसमें, और फिर ये पानी पे पकेगा।
कितना पानी जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि अंदाजे से डालूँगा। इसमें अभी होगा 600 ml के करीब पानी। 400 ml मैंने अभी डाला है। 400 ml के इसको बॉईल करना है अभी। वो है पनीर। I'll try my best to get like proper cubes. अरे कट जा। 1 2 उप्स 3। नीचे मत गिरना, मिट्टी में हो गया तो नहीं खाया जाएगा। और अब इसको पकने दिया जाए। हालांकि ढक देना चाहिए इस मौके पे, पर क्योंकि मेरे पास इसका ढक्कन नहीं है और मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करने को समझ नहीं आ रहा है क्या ढका जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास प्लास्टिक की, मेटल की या वैसे कुछ नहीं है। तो अब इसको पकने दिया जाए। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर। बस इतने हमारा मटर पनीर तैयार हो रहा है। डेजर्ट के लिए कौन रुके? आई एम वेरी ग्रीडी। तो मैं एक हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर डेजर्ट कहना चाहिए। इट्स वेरी 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 पॉपुलर, सबको पसंद है। नेसी मोन से खाओगे? नहीं, मैं खा लेता हूँ, मना हो गई। डेजर्ट है गुलाब जामुन। एक ही लाया हूँ मैं वैसे। वैसे तो मटर पनीर के बाद खाना चाहिए था, पर कौन रुके। खाना होता तो अब तक खा लेता, मैं ही खा लेता हूँ। सॉरी सॉरी। गदर बना है यार। Let's do one thing now. I'm quite full because I've already eaten a lot of stuff. टेस्टी तो बना है, पर ये इसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी अगर मैं इसे ज़बरदस्ती खाऊंगा। तो व्हाट विल डू, आई लेट इट कूल डाउन अभी थोड़ी देर, 5-10 मिनट, और फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा इसको अपने टेंट में रख देंगे और फिर घूमने जाते हैं। और फिर शाम को जब हम वापस आएंगे घूम के, तब इसको हमारा डिनर हो जाएगा। तो हमारा डिनर रेडी हो गया अभी से। I just realized that there is ash on my face. मुंह काला करा के आ गया है लड़का विदेश में। पता नहीं कब से मुंह काला करा के घूम रहा हूँ। Hey there. Come here. Very excited. Where is he going? He's going to you. And the Yeah. camera. She's very annoying. Just Yeah. don't hug it. Hey, buddy. Oh, she's attacking my food. तो हम टेंट से वापस आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं लंबी वॉक पे। जो रिसेप्शन पे लोग हैं उन्होंने मुझे पेपर मैप दिया, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो जीपीएस से नहीं चला जाएगा। लेकिन एक 10 किलोमीटर लंबी वॉक है लेक के साथ साथ, और यहाँ से कुछ दूरी पे फोयर्स वाटरफॉल आना चाहिए, तो वाटरफॉल देख के आएंगे। Yep, somewhere a loop like that. 10 से 12 किलोमीटर का लूप। I don't know, 2-3 घंटे में जाना चाहिए। तो फिर आके अपना मटर पनीर खाएंगे। लेट्स गो।
One of the most celebrated poets of Scotland, called Robert Burns, writes about this waterfall. Among the healthy hills and ragged woods, the roaring Foyers pours his messy floods, till hill he dashes on the rocky mounds, where through a shapeless breach his streams resounds. Wonderful writing, but to be honest, I wasn't impressed by the waterfall. Sorry, Scottish people. Finally, back home. I finished like 5 hours of the audiobook. Sorry, not 5 hours. 5 hours is left. So I finished like 15 hours of it. So 3/4 is done. I'll finish it maybe by tomorrow. So not bad. अब सोएगा विशाल अपने बिस्तर पे. हा 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 हा.